Hello bachcho, let's read this question. The question says dependence of spontaneity on temperature. For a process to be spontaneous at constant temperature and pressure, there must be decrease in free energy of the system in the direction of the process. That is, delta G at constant temperature and pressure should be less than 0. Delta G at constant temperature and pressure is equals to 0 implies the equilibrium condition. Delta G at constant temperature and pressure should be greater than 0 corresponding to non-spontaneity. Gibbs-Helmholtz equation relates the free energy change to the enthalpy and entropy change of the process as delta G at constant temperature and pressure is equals to delta H minus T delta S. The magnitude of delta H does not change much with change in temperature, but entropy factor changes appreciably. Thus, spontaneity of a process depends very much on temperature. For endothermic process, delta H और delta S दोनों ही positive होते हैं. The energy factor यानी the first factor of equation opposes the spontaneity, whereas entropy factor favors it. Temperature अगर कम रहेगा तो favorable factor T delta S will be small and may be less than delta H. तो उस केस में delta G will have positive value indicating non-spontaneity of the process. अगर temperature बढ़ा दिया on raising the temperature T delta S increase कर जाएगा appreciably when it exceeds delta H. Delta G would become negative and the process would be spontaneous. अगर exothermic process होगा delta H और delta S दोनों ही negative होगा. फर्स्ट फैक्टर जो होगा फेवर स्पॉन्टानिटी, जो सेकंड फैक्टर है पोज करेगा एट हाई टेम्परेचर टी डेल्टा एस is greater than delta H. Delta G will have positive value showing thereby the non-spontaneity of the process. On decreasing the temperature, the factor T delta S decreases rapidly and delta H बड़ा हो जाएगा किससे T delta S से. delta G जो है वो it becomes negative and the process occurs spontaneously. Thus, an exothermic process may be spontaneous at low temperature and non-spontaneous at high temperature, right? For the reaction at 25 degrees Celsius, X2O4 liquid gives us 2XO2 gaseous. Delta H कितना दिया है 2.1 kilocalories. Delta S has been given as 20 calories per Kelvin. The reaction would be option A, spontaneous, option B, non-spontaneous, option C. At equilibrium, option D, unpredictable. राइट हमसे दिया क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है X2O4 लिक्विड फॉर्म में है, उससे हमारे पास 2XO2 बन रहा है गैसियस फॉर्म में. डेल्टा H की वैल्यू दी हुई है 2.1 किलो कैलोरीज, डेल्टा S की वैल्यू दी हुई है 20 कैलोरीज पर केल्विन. अब हमें बताना है रिएक्शन क्या होगी. The key concept for this question is Gibbs-Helmholtz equation. Delta G is equals to delta H minus T delta S, right? Now, delta G is equals to delta H कितना दिया हुआ है 2.1 किलो कैलोरीज यानी 2.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 कैलोरीज माइनस टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, उसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 273, ये आ जाएगा कितना 298 केल्विन इंटू डेल्टा एस क्या हो जाएगा हमारे पास 20 कैलोरीज पर केल्विन. कितना 20 कैलोरीज पर केल्विन. केल्विन से पर केल्विन कट जाएगा, राइट. हमारे पास आ जाएगा कितना 2100 कैलोरीज माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बेसिकली आ जाएगा 5960 कैलोरीज. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 3860 कैलोरीज, राइट. क्या आ जाएगा माइनस 3860 कैलोरीज. डेल्टा जी क्या है हमारे पास नेगेटिव है. डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है तो रिएक्शन क्या होती है हमारे पास, रिएक्शन होती है spontaneous, right? Correct answer for this question will be option A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.